Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing the topic from the unit number 2. Okay, so we have discussed the last topic that we discussed was whom to consult and computer shortcuts. So these are the topics that we have done. Okay, so in which we talked about the various specialized doctor that are specialized for treating for the treatment of various particular organs of our body, and some that to whom we are going to consult if we face any kind of problem regarding any such part. Okay, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे. Okay, so now today we will start with the next topic, that is hello world. This is given at page number 64. So all of you kindly open your books at page number 64, that is hello world. Okay, write down the today's date as well. Okay, this is here the topic you can see on the screen, that is hello world. Now let's talk about the topic. Okay, so first of all, before starting the topic, let's discuss what we are going to discuss in this. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या करेंगे. So class, in this topic we will discuss about the various uh, inventions that had taken place over the different period of time. आपको पता है हर चीज की कभी ना कोई शुरुआत होती है. तो अभी आप अपने आसपास कोई भी चीज देख लीजिए, जस्ट टेक एनी रैंडम थिंग और जस्ट सी एनी रैंडम थिंग. आप अभी जहां बैठ के वीडियो देख रहे हो, ओके, आप जो मोबाइल आपके हाथ में है या लैपटॉप जिस पे आप देख रहे हो अभी बैठ के, सो यू हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत किसने की, इसको बनाने का आइडिया कैसे आया. ओके, तो वैसे ही जैसे आप मोबाइल के बारे में, टीवी के बारे में, कंप्यूटर गेम्स जो आप खेलते हो, तो वो आइडियाज एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई. सो just like that, in this topic as well, we will discuss about the various inventions that had taken place over the world during the different period of time by the great inventors. ओके, जो अलग अलग चीजें हैं, कब उनका इन्वेंशन हुआ, जो हम चीजें देख रहे हैं वो उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, बट उनकी बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो भी चीज हो. ओके, एंड किन्होंने उसको बनाया था और कब बनाया था. ओके, सो हियर इन दिस टॉपिक, देखिए टॉपिक का मतलब है हेलो, टॉपिक का नाम है हेलो वर्ल्ड. सो दैट मीन्स कब पहली बार, देखिए जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो कहते हो हेलो. तो वैसे ही जो इन चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि जब वो उस दुनिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने, उनकी शुरुआत कैसी हुई, दैट हाउ दे सेड द हेलो टू द वर्ल्ड. ओके, सो हियर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज, डू यू लाइक सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस. मोर Morse code is a system of sending messages by arranging the dots, dash, and spaces instead of letter, numbers, and punctuations. This special system was created by Samuel F.B. Morse. Okay, so now we are talking about sending the messages to the different uh, people, और secret, not messages, actually secret messages मतलब खुफिया messages. ठीक है, and for this the people they use the Morse code. जो लोग थे वो Morse code system use करते थे. ओके, जिससे कि वो अपने सीक्रेट मैसेजेस जिसको उनको भेजना होता था उसको भेजते थे. ओके, अब वो सीक्रेट मैसेजेस, दैट व्हाई दे यूज टू सेंड द सीक्रेट मैसेजेस, the reason behind it, they want to send the secret messages so that the other person जो कि बीच में the middle person है, that is not able to understand the codes. So इसलिए they prefer to send messages using the different codes. So in this you can see here, okay, you can see the cursor that I'm pointing towards. देखिए ये जो cursor है, okay, this यहाँ पे लिखा हुआ है Morse code. So this is Morse code. अब ये Morse code है क्या बेटा, देखिए ये डिफरेंट, एक तरह से आप कह लीजिए दिस इज अ कोड, ये दीज आर द कोड वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर सेंडिंग द सीक्रेट मैसेजेस. ओके, इसके अंदर दे यूज डॉट्स,
dashes and spaces instead of letters, number and punctuations. देखिए अगर आपको जनरली अगर किसी फ्रेंड को कुछ लिख के भेजना हो, आप व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, उस पे वर्ड्स यूज करते हो, नंबर्स यूज करते हो, पंक्चुएशंस, कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप यूज करते हो, तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल मैसेजेस भेजने का तरीका। ओके, जिससे कि अगर कोई रीड भी कर लेता है तो कर लेता है, सो दैट विल बी नो प्रॉब्लम फॉर अस। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेम्यूल मोर्स एफबी मोर्स, सॉरी, मोर्स कोड, सो जो कि सैम्यूल एफबी मोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज अ वे और द सिस्टम थ्रू विच द पर्सन कैन सीक्रेट मैसेजेस टू द अदर पर्सन। ओके, तो उसमें ये क्या यूज करते थे, यूज द डैश, उसमें वो डैश, डॉट्स और स्पेस यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पे नीचे पिक्चर जो दी है मोर्स कोड की, देखिए ए का मीन्स डॉट, स्पेस, डैश, बी का मतलब डैश, स्पेस, डॉट, स्पेस, डॉट, स्पेस, डॉट, स्पेस। देखिए इसमें इन्होंने तीन चीजें यूज की हैं, ए टू लेके, ए से लेके जेड तक के लिए और 0 से 9 के लिए इन्होंने अलग अलग methods यूज किए हैं, और अलग अलग codes they have used for the alphabets from A to Z and from the numeric numbers 1 to 9. So these are the codes, okay, that is used for sending the secret messages to the other person so that the middle person is not able to understand it. Okay, and now the question is that who invented this? किसने इस मोर्स कोड को इन्वेंट किया था? तो दिस मोर्स कोड was invented by Samuel F.B. Morse. तो सैम्यूल एफ बी मोर्स ने अपने ही नाम के ऊपर अपने इस मोर्स कोड का नाम रखा था, दैट इज मोर्स कोड। मूविंग नेक्स्ट, now we will talk about one of the very important person in the history of science, that is Alexander Graham Bell. Okay, so he's one of the great person in the history of science. His name is Alexander Graham Bell. अब Alexander Graham Bell कौन थे? So Alexander Graham Bell invented the telephone in the year 1876. He made the first call on 10th March 1876 to his assistant Thomas Watson. Mr. Watson, come here, I want to see you. At that time, Mr. Watson was right in the next room. Okay, so Alexander Graham Bell कौन थे आपको अगर पता हो? So Alexander Graham Bell is the person who has invented the telephone. So telephones that we are using, mobile phones जो आप यूज करें, देखिए उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, बट धीरे धीरे जो जैसे जैसे इनोवेशन होती गई, इम्प्रोवाइजेशन होती गई, वी गॉट द, हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल फोन्स। बट जो स्टार्टिंग हुई थी, आपने देखा होगा, अगर सुना होगा या मूवीज में देखा होगा कि पहले वो लंबी लंबी तारों वाला डायल वाला जो फोन्स थे वो चलते थे। ओके, उनको भी धीरे धीरे चेंज होते गए, पहले वो घुमा के नंबर डायल करते थे, देन बटन्स प्रेस करके, उसके बाद वायरलेस आए, एंड नाउ वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स फॉर मेकिंग कॉल्स। ओके, सो एक्चुअल में ये फोन्स का जो सिस्टम है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, सो द सिस्टम ऑफ फोन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1876 by Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell has invented the telephone in the year 1876. He made the first call on 10th March 1876. So Alexander Graham Bell ने सबसे पहली जो कॉल की थी फोन से, जब उन्होंने इन्वेंट किया था 1876 में, तो उन्होंने सबसे पहली कॉल कौन सी डेट को की थी? सो ही हैज मेड हिज फर्स्ट कॉल ऑन 10th March 1876 टू हिज असिस्टेंट थॉमस वॉटसन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहली कॉल अपने असिस्टेंट जिनका नाम था थॉमस वॉटसन, उनको की थी, यूजिंग द फोन और द टेलीफोन दैट ही हैड इन्वेंटेड। ओके, सो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने असिस्टेंट को कॉल किया था, तो उन्होंने क्या बोला था? मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। मिस्टर वॉटसन, यहाँ आइए, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, या दिखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। ओके, एट दैट टाइम मिस्टर वॉटसन वाज राइट इन द नेक्स्ट रूम। और जब उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल की थी, तो असिस्टेंट उनके उस वक्त उनके नेक्स्ट रूम में, बिल्कुल साथ वाले रूम में ही बैठे थे। तो जस्ट इज यू कैन, आप कह सकते हो कि दैट वो जस्ट ट्राई कर रहे थे कि क्या हम एक दूसरे से अलग अलग जगह बैठ के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस वाज हिज इन्वेंशन। तो देखिए, जो टेलीफोन्स आपने पहले देखे हैं और आज आप यूज कर रहे हो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टेलीफोन दैट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन इन्वेंट किया था, उसकी पिक्चर देखिए। ओके, यू कैन सी द पिक्चर हियर, Alexander Graham Bell. This is the picture of telephone that was invented by Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell speaking into his model of the telephone. देखिए, Alexander Graham Bell की पिक्चर दी हुई है जिसमें कि उन्होंने
उन्होंने जो टेलीफोन इन्वेंट किया था, जो उसका डिजाइन था, he is holding that in his hand. So this telephone was the telephone that was invented by Alexander Graham Bell in the year 1876, and with this telephone इन्होंने सबसे पहला कॉल किया था on 10th March 1876 to his assistant, okay, whose name was Mr. Watson or Thomas Watson. Okay, so this is the second thing that we have discussed. Moving next to the third one, that is, now we will talk about the another very important invention that took in the period took in the year 1780. ये अलग एक important इन्वेंशन है जिसकी इन्वेंशन 1780 में हुई थी. देखिए, फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गazette इन द ईयर 1780. देखिए, आजकल आपने देखा होगा इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं मार्केट में. दे आर डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर इन द मार्केट. अलग अलग इवन जो न्यूज़पेपर्स हैं दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़. लाइक कुछ लोग जो बच्चे जो जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, सो दे यूज टू टेक द बिजनेस न्यूज़पेपर्स. उसमें सिर्फ बिजनेस की ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, कुछ को एम्प्लॉयमेंट में मतलब दे आर इन सर्च ऑफ जॉब, तो वो जॉब की सर्च में होते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो वीकली छपता है, तो उसमें दे पे मोर अटेंशन. एंड सम जो जनरल न्यूज़पेपर जो हम डेली, आप लोगों से कई होगी घर भी आता होगा, सो दैट जिसमें कि हम डेली जो न्यूज़ है, डेली की अपडेट जो भी है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, दैट यू कैन गेट इन द नॉर्मल न्यूज़पेपर. तो देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आपने नाम भी सुने होंगे. द हिंदुस्तान टाइम्स, सॉरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, एंड द हिंदू, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, ओके, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर दैट आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. आपको पता है हमारे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मोस्टली, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते हैं. सो देयर आर नियर अबाउट 200 प्लस लैंग्वेजेस इन विच द न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एवरी डे. 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस में हमारे इंडिया में जो डेली जो न्यूज़पेपर है वो छपता है. बिकॉज द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री इज वेरी हाई. ओके, बट नाउ डेज जैसे जैसे ई पेपर्स आ गए हैं, तो जो ये हमारे हार्ड कॉपी वाले न्यूज़पेपर थे, that are quite less in demand. But earlier, the people they love to. This is kind of an addiction for the people to read the newspaper. अभी भी आपने देखा होगा, आपके भी घर में हो सकता है कोई होगा जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब वो सारा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं. कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है. ओके, सो नाउ ये तो हो गया न्यूज़पेपर. सो नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड? देखिए, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट इन द ईयर 1780. सो 1780 में इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज बंगाल गैजेट, दैट वाज published. तो इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज published in India? That is Bengal Gazette, and it was published in the year 1780. तो देखिए, you can see the picture of a copy of Bengal Gazette. So ये दुनिया का सबसे पहला जो, सॉरी, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गैजेट, ओके, जो कि हमारे इंडिया में पब्लिश हुआ था 1780 में. This is the copy of that. You see की copy है. Okay, so this is, so the first newspaper published in India was Bengal Gazette. Next is the fourth invention that we will talk about, that is television. So nowadays everybody is interested in watching the television, especially news, and the students like you, you prefer to watch cartoons, okay, animated movies on the television. तो आजकल आप बहुत टीवी वगैरह देखते हो. Okay, so now we will talk about the television or the TV. कि सबसे पहले टेलीविजन कब इन्वेंट हुआ था, किसने किया था और कैसे हुआ था. So first of all, we will talk about the person who has invented this television. So that is John Logie Baird. So the person who invented the first television was John Logie Baird, जिनको कि JL Baird बोला जाता है. So his full name is John Logie Baird, but the people they call it as JL Baird. So JL Baird has invented the world's first television system. तो JL Baird ने दुनिया का सबसे पहला जो टेलीविजन सिस्टम है वो इन्वेंट किया था in the year 1920.
6. The first person to appear on television was a young office boy from the building where Baird worked. ओके और सबसे पहले देखिए सब जो जेएल बेड हैज इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेलीविजन इन द ईयर 1926 and the first person to appear on the television. So who was the first person, okay, that was that appeared on the television was an office boy of JL Baird. okay, तो ये JL Baird जो थे, JL Baird थे, उनका जो ऑफिस बॉय था, ओके, तो उन्होंने सबसे पहले टेलीविजन में जिसको अपीयर किया था, मतलब आप टीवी देखते हो, आप देखते हो न्यूज में बहुत सारे एंकर्स दिखते हैं, लोग दिखते हैं, मूवी देखते हो, कार्टून्स देखते हो, तो वैसे ही जो सबसे पहला टेलीविजन था, जो उस टेलीविजन सबसे पहले टेलीविजन पे आने वाले पर्सन कौन थे, वो थे जेल बेड के ही ऑफिस में काम करने वाले एक ऑफिस बॉय होते हैं जैसे कि बेटा, जो कि मतलब अलग अलग जैसे छोटे मोटे काम करते हैं, लाइक चाय बनाना, सफाई करना, सो दे आर नोन एज द ऑफिस बॉय. ओके, सो जेल बेड के ऑफिस में ही ये काम करने वाले ऑफिस बॉय को उन्होंने सबसे पहले टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया था. सो द फर्स्ट पर्सन टू अपीयर ऑन द टेलीविजन, सब दुनिया में सबसे पहले टेलीविजन पे आने वाले पर्सन कौन थे, ही वाज एन ऑफिस बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर जेल बेड वर्ड. तो जेल बेड जिस कंपनी में, सॉरी, जिस बिल्डिंग में काम करते थे, उन्होंने उसी बिल्डिंग के ऑफिस बॉय को सबसे पहले अपने टेलीविजन पे अपीयर करवाया था. Okay, so here you can see the picture of Jael Baird along with is the television system. तो देखिए, you can see the picture. This is the picture of Jael Baird, जिसमें कि उन्होंने वो जो अपने टेलीविजन सिस्टम के साथ खड़े हैं, that was invented by him. Okay, so the thing you need to know is that who invented the first television? That is Jael Baird. Clear? Okay, now we will move to the next one. Okay, so this is the next here. Now what is it? That is, the development of the World Wide Web was started in the year 1989 by Sir Tim Berners-Lee and his colleagues in Switzerland. The technology was made available for the common people in the year 1992. Soon, the word www had millions of active users. Are you one of them? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब. देखिए, जब भी आप मोबाइल पे कोई साइट सर्च करते हो, आजकल तो खैर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट पहले कभी भी आप किसी भी साइट को सर्च करते थे, तो यू नीड टू राइट इट स्टार्टेड विद www डॉट, कोई भी चीज अगर आपको कोई भी साइट खोलनी है, तो सबसे पहले हम उस पर www डॉट लिखते हैं, उसके बाद जो कि सपोज यू वांट टू ओपन द डिजिकैम, सो यू विल राइट डाउन www 3 times www डॉट digicamp.com. ओके, आपको digicamp खोलनी है, so you will write down the www for the 3 times. So ये the www 3 times जो है उसका मतलब क्या, that means world wide web. Okay, so this is the full form of www, that is world wide web. So सब जो world wide web है बेटा, वो सबसे पहले कब start हुआ था, in the year 1989. Now, who was the inventor of www or world wide web? So that is Sir Tim Berners-Lee. जो सर टीम, उनकी पिक्चर भी देखिए, यू कैन सी हेयर, दिस इज द सर टी बैलम्सली, जिन्होंने की सबसे पहला जिन्होंने की वर्ल्ड वाइड वेब है जो स्टार्ट किया, तो सो दैट वाज Sir T. Berners-Lee. Okay, so he has in Tim Berners-Lee has in he started the World Wide Web in the year 1989. Okay, उन्होंने अकेले नहीं, इसके साथ उनके कुछ कलीग्स थे जिन्होंने मिलके स्विट्जरलैंड में ये वर्ल्ड वाइड वेब जो शुरू किया था. Okay, उसके बाद in the year 1992. So it was World Wide Web was started in the year 1989, but 1992 में this World Wide Web is made available for the common people. जो आम लोग थे उन्होंने भी वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कब शुरू किया, इन द ईयर 1992 में. ओके, अब आजकल आप देख रहे हो द एवरीथिंग दैट वी सर्च ऑन द नेट ऑन एनी ब्राउजर, सो दैट नीड्स टू स्टार्ट विद www. देखिए, आजकल दुनिया में करोड़ों वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने वाले करोड़ों लोग हैं. क्या आप उसमें से एक हो? आर यू वन ऑफ इट? Yes, we are also one of it. Okay, so now who's the inventor of World Wide Web? That is Sir Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee is the inventor of, has invented World Wide Web along with his some colleagues in Switzerland. Okay.
Okay, so now we will start with the next one. That is my the next is, today you can shop using your computer or the smartphones anywhere and do not need to go to shop. This is called online shopping or e-commerce. This was first developed by Michael Eldridge. So now we will talk about the very common practice these days, that is online shopping. So this is a very common practice that we are following these days. आजकल आपने देखा होगा ये बहुत ही कॉमन सा एक काम है, एक कॉमन सी चीज है जो कि आजकल मोस्टली सबको ही कर रहे हैं, जो कि दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग। तो आज देखा होगा आपने ऑनलाइन शॉपिंग घर में आप भी कर, आप तो नहीं अभी छोटे हो, घर में मम्मी पापा भैया दीदी जो बड़े हैं वो दे यूज टू बाय थिंग्स ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ठीक है। देखिए देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा एंड शॉप क्लूज। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, द पीपल, अगर लोगों को कुछ परचेज करना होता था वो क्या करते थे, दे बाय द थिंग्स, मतलब वो पहले शॉप पे जाते थे, वहां ढूंढते थे, फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता था, देन दे बाय, पे द कैश एंड देन दे गेट द प्रोडक्ट, और जो भी उनको चाहिए होता था। और इनफैक्ट कभी कोई प्रोडक्ट खराब होता था तो फिर उनको दोबारा से शॉप पे जाके उसको चेंज करवाते थे, एक्सचेंज करवाते थे या रिटर्न करते थे। बट नाउ today we are following a very common method of shopping, that is online shopping. Online shopping means online आप कोई भी शॉपिंग साइट पे जाके you can search the things of your preference, of your need, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग you can search the things and with certain filters कि किस ब्रांड का चाहिए, कैसा चाहिए, क्या कलर चाहिए, so you can apply different filters को apply करके you can buy the different things as per your requirement. Okay, so this process of online shopping is also known as e-commerce. इसको ई कॉमर्स भी बोला जाता है। देखिए बेटा अभी आप छोटे हो, सो सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जब आप बड़े हो जाओगे, व्हेन यू विल पास द क्लास 10th एंड ऑनवर्ड्स, सो देन यू विल केम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट, द कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नाउ उसी चीज को बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसिंग ऑनलाइन, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन खरीदना, ओके, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। सो नाउ हु started this idea of e-commerce? E-commerce का idea introduce किसने किया? So that is Michael Eldridge. So Michael Eldridge is a person who has came up with the idea of this online shopping, that is also known as e-commerce. So he was the first person who developed this e-commerce or the online shopping system. Okay, moving next to the Facebook. So this is the last one, that is Facebook. देखिए all of you must be aware of the Facebook. आपको आपने Facebook के बारे में सुना होगा. This is a social networking site that is commonly used by the people nowadays. आजकल लोग इसको बहुत ही commonly use कर रहे हैं. That is Facebook. So Facebook is an American company founded in the year 2004 by Mark Zuckerberg, uh, Udado, Eduardo Saverin, Andrew McCullum, Dustin Moscovici, and his Chris Hughes. It was founded when they were all studying in Harvard University. It is free of cost social networking website. देखिए फेसबुक जो है, ओके, ये किसने इन्वेंट की थी? सो ये अमेरिका में, it was invented in America in the year 2004 by Mark Zuckerberg along with his some friends. देखिए आजकल जो मेनली जो फेसबुक की जो ऑनर है, उसको वो किसको माना जाता है? दैट इज मार्क जकरबर्ग। बट एक्चुअल में वो कंप्लीटली उनका नहीं है, मतलब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जब जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे इन द अमेरिका, सो उन्होंने उस टाइम पे ये सोशल नेटवर्किंग साइट चलाई थी फेसबुक, जिसके थ्रू यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल दैट आर लिविंग in the other countries or in the other corner of the world. Okay, through online you can connect with the people that are living in the other corner of the world. Okay, so ये अकेले when they were just when Mark Zuckerberg and his friends were studying in Harvard University, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने ये सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू की थी, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स पूरी फ्री। दिस इज अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। तो देखिए मार्क जकरबर्ग के साथ जिन्होंने इस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट जो बनाई थी,
उनके नाम यहाँ पे दिए, दैट मार्क जुकरबर्ग के अलावा थे Eduardo Saverin, then Andrew McCullen, Dustin Moskowitz, and Chris Hughes. So 1, 2, 3, 4, 5. So these 5 friends, okay, Mark Zuckerberg and his 4 friends, they came up together with the idea of this social networking site, which is most popular for one of the most popular networking site these days, that is Facebook. Okay, now here it is given a very important point. It is given in the year 1945, the computer weighed 27 tons and was the size of an entire room. It also made a loud noise while working. So देखिए 1945 में, so they have invented the first, in the year 1945 the first computer was invented. Okay, and the size of that computer was near about 1 ton, sorry 27 tons. So जो सबसे पहला कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था उसका साइज था नियर अबाउट, सॉरी उसका वेट था दैट इज 27 टन्स. ओके, और जो उसका साइज था दैट वाज नियर अबाउट दी साइज ऑफ अ रूम, एंटायर रूम, जिसको कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहा जाता है. ओके, सो दैट वी, उसके बारे में बेटा आप जब नेक्स्ट क्लास 4 में जाओगे, सॉरी 5th में जाओगे, सो देन यू विल केम टू नो अबाउट द डिफरेंट साइजेस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर, जो कैसे वो इन्वेंट हुए, कैसे कौन कौन से कंप्यूटर थे, सो इन सब के बारे में यू विल कम टू नो इन द क्लास 5 in your computer book. Okay, so this was from the chapter that is Hello World. So here the quick quiz is given, so let's move to the quick quiz that is given over here. Okay, so the first is, which of these is not a term so far used in the world of computers? Okay, तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में, मतलब कंप्यूटर में नहीं यूज की जाती? तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन computer? The first is cookies, second is biscuits, third is raspberry bee, and the fourth is the Kit Kat. So which of these terms is not used in computer? Okay, that is biscuits. That is option number B. So देखिए, these cookies, raspberry bee, and Kit Kat, these all are, so देखिए बिस्किट, these cookies, raspberry पी and KitKat, these are the versions of एंड्रॉइड. तो देखिए आजकल आप मोबाइल्स यूज कर रहे हो, दैट इज एंड्रॉइड मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं, एंड दे आर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आईफोन्स वगैरह में होते हैं. So these are the operating systems that we are using these days in the mobile phones and in our window है जो हम लैपटॉप में यूज करते हैं. ये सब क्या है? These are the names of operating system. So now उन्हीं operating system के कुछ versions हैं. ओके, जैसे इम्प्रूव, जैसे जैसे हम नई नई टेक्निक्स आती है वैसे वैसे उनके जो वर्जन है वो इम्प्रूव होते रहते हैं. तो ये कुकीज, रेस्पबेरी बी एंड किटकैट, दीज आर द नेम्स ऑफ द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड वर्जन. ओके, बट बिस्किट्स इज नॉट एंड द नेम ऑफ एनी ऑफ द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड सिस्टम. तो बिस्किट इज किसी भी एंड्रॉइड वर्जन का नेम नहीं है. तो द आंसर फॉर द फर्स्ट इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिस्किट्स. Next, what are the cute symbols showing various emotions called? Okay, आपने देखा होगा when you send the messages on the WhatsApp, कई बच्चे ग्रुप में भी भेजते हैं तो मैम फिर डांट लगाती हैं. Okay, so some people they used to send some images, सॉरी, बड़े छोटे छोटे क्यूट से येलो कलर के सिंबल्स भेजते हैं. सो व्हाट इज दैट इमोशंस कॉल? उन इमोशंस को क्या बोला जाता है? दैट इज इमोजीज और इमोटिकॉन्स? दैट इज इमोजीज. उनको हम क्या बोलते हैं? इमोजीज. सो आजकल व्हाट्सएप में मोस्टली द पीपल यूज दिस इमोजीज टू सेंड देयर मैसेजेस. These are the very cute small symbols होते हैं छोटे छोटे. Okay, that is a faces with the various expressions. Okay, so in the emojis there are various yellow faces with various expressions. Okay, moving next to the third one. So sorry, the answer for the second is emojis. The spelling of emojis is EMOJIS, that is emojis. Moving next to the third. In which year was the WhatsApp launched? So the WhatsApp that we are using nowadays, आजकल हम जितना WhatsApp use कर रहे हैं, so ये इसका ये launch कब हुआ था? For the first time it was introduced in the year 2009. So WhatsApp was introduced for the first time in the year 2009. So the answer for the third is 2009. That is 2009. Fourth, the last is, what are the terms 3G, 4G and 5G related to? ये 3G, 5G और 4G हम जो terms है ये किस चीज से related है? Phone networks or digital cameras. So these 3G, 4G and 5G terms they are related to phone networks. Okay, that is related to phone networks.
Okay, so देखिए the speed. So ये 3G 4G 5G बेटा, this is the one of the terms that are related to 4G which increases the speed, जो कि हमारी नेट की स्पीड है बेसिकली, दैट इंक्रीजेस जैसे जैसे ये जी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 4G 5G, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन. ओके, जैसे ही जनरेशन इंक्रीज होती जा रही हैं, द स्पीड ऑफ द नेट दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज, दैट इज ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग. सो द आंसर फॉर द फोर्थ वन इज फोन networks. Okay, so this was from the topic that is Hello World that we have discussed in the today's session. Okay, so with this, I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a great day and safe day.